वेलकम बैक टू माई चैनल एंड काफ़ी दिनों के बाद हम लोग फाइनली एक प्रॉपर फिटनेस वीडियो बना रहे हैं एंड दिस टाइम इट इजंट अबाउट टारगेटिंग अ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज विच यू माइट बी डूइंग इनकरेक्टली एंड फॉर रेपिटेशंस हम लोग हमेशा क्वांटिटी प्रेफर करते हैं ओवर क्वालिटी विच इज़ रॉन्ग. वी शुड गो फॉर क्वालिटी रेप्स एंड अगर आप एक्चुअली एफर्ट डाल रहे हो एंड इट्स नॉट मेकिंग एन इम्पैक्ट तो उसका कोई यूज़ नहीं है. तो अगर आप करेक्टली वर्कआउट करते हो विथ राइट पॉस्चर, राइट इफेक्ट, इंगेजिंग योर कोर, इंगेजिंग योर बॉडी पार्ट, रिक्वायर्ड बॉडी पार्ट, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. प्लीज़ वॉच इट टिल दी एंड एंड वीडियो को लाइक करें अगर आपको हेल्पफुल लगा हो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. नाउ विदाउट फर्दर ado, let's get started. Let's start with shoulder press using dumbbells and ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है if you want defined shoulders. तो हम एक लाइट वेट डम्बल से स्टार्ट करेंगे. दिस इज़ ऑफ 5 kgs एंड अगर आपको इसका प्रॉपर पॉस्चर पता है तो आप बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो. एंड फॉर दैट यू हैव टू कीप योर आर्म्स एट 90 डिग्रीज एंड इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है वो सेम होगा एंड इट शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड, पैरेलल टू योर शोल्डर्स. एंड जब आप इसको ऊपर लेते हो तो it should be controlled, it should be slow and overhead meet करना चाहिए like this. It shouldn't be here, it shouldn't be here, it should be right in like parallel to your shoulder. Core tight, squeezed. The range of motion should be slow and controlled. Exercise is one of my favorites for lower body, sumo squat, weighted sumo squat. बहुत ही effective है and for the longest time मैं भी इसको गलत करती थी but now I know the exact posture, so I'm going to let you all know about it. तो इसमें आपको अपने पाँव को अपने शोल्डर से ज़्यादा वाइड रखना है and make sure that your toes are at a 45 degree angle. It shouldn't be like this, it shouldn't be like this, it should be like this, okay? And glutes properly pushed back, core tight. And then knees outward. It shouldn't be like this, hooked inwards or a lot out. Knee एकदम proper out होना चाहिए and controlled. नेक्स्ट अप इज पुशअप्स एंड पुशअप्स के साथ भी ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है. पीपल ट्राई टू अचीव 25-30 पुशअप्स एट वंस, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप पुशअप कर रहे हो इट शुड बी राइटली डन एंड यहाँ पे पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड इसमें बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं. वन फॉर्म विच आई लव इज़ हैंड्स वाइड अपार्ट व्हेन यू वांट टू मेक इट फॉल ऑन योर चेस्ट. एंड एक बहुत बड़ा इसके साथ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम लोग करते वक्त ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारा एल्बोज बहुत आउटवर्ड्स है. बहुत आउटवर्ड्स नहीं होना चाहिए. इट शुड बी राइट एंड आपका शोल्डर ब्लेड मूव करना चाहिए एंड इट शुड बी प्रॉपरली डन all the way down, all the way up. So let's try it. Next up is dumbbell shrugs and shrugs भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर डिफाइंड ट्रैप्स. एंड आई नो हम लोग इतना ज़्यादा फैशनेबल कपड़ा पहनते हैं स्पेशली ऑफ शोल्डर, कोल्ड शोल्डर,
and in all of that beautiful shoulder really matters. and उसके लिए shrugs बहुत ज़्यादा important exercise है. and shrugs हमेशा बहुत heavy weighted dumbbell के साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप light weight dumbbell से करते हो तो वो proper effect नहीं आएगा. and इसमें आपको कोई extra momentum add नहीं करना. you have to squeeze your abs, you have to squeeze your traps and do it. 8 to 10 reps is max. Last one is deadlifts. Deadlifts भी दो तरह का होता है, sumo and conventional. We are going to talk about the conventional deadlifts. and इसमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है. and deadlifts के सारे बहुत सारे misconception है. We are going to burst it out right now. and इसके साथ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है. You have to make your toes over the bar, and for a proper intact grip आपको overhead grip रखना होगा. and make sure that your shoulders are straight and glutes inwards होना चाहिए. and when you lift it, make sure that you are taking help of your shoulders. it's always touch and go. That's pretty much about the video, and I really hope you found this helpful. Please let me know more exercises जो आप लोग चाहते हैं कि मैं करके दिखाऊं, and please comment down your video ideas, suggestion related to anything fashion, fitness, lifestyle. Follow me on Instagram @Alisha180_, and please subscribe. I love you guys, and I'll see you in the next one. Tada!